Hello and welcome back to a video of Football Medico. So the Premier League season is back, and so is your boy. The Football Medico is back on this channel, and season start होने वाला है. Just a few hours left before we enter a new season, new beginnings, and मतलब एक प्रथा हो चुकी है अब तो. Every football fan, अब तुम्हें हमारा guilty pleasure कहो या कुछ कहो, we will do predictions before a season. Every football fan will do a prediction. तुम हो, मैं हूँ, and at the end of the season we'll regret about it. मतलब ये होता ही है. So again for this season I am back with some predictions. I'll tell you कौन कैसे predictions करेंगे हम Premier League के this season. Last year we went with a similar concept, and this year as well we will go with a similar concept where we discuss the Premier League top scorer, the playmaker, the underachievers, the overachievers, the surprise, and the top six of the season that are according to me. As of now, I am recording this video before the start of the Premier League season. सारे transfers भी नहीं हुए हैं. Transfer window is still open, so things might change. कि किसी एक टीम की पोजीशन बहुत ज्यादा चेंज हो सकती है. In terms of their squad चेंज हो सकती है. Players in and out move कर सकते हैं. So I think this is not the right time to make predictions, but it has to be done before the season, right? So I am going with it. I will do the predictions, and without wasting any time, let me start with the first point, that is our top scorer. According to me, see, obviously the names like Erling Haaland, Darwin Nunes, and even other players, Julian Alvarez, yeah, बहुत सारे players have entered. New teams have come to the Premier League, and they will be contenders to take that top scorer ka spot. But for me, I still am backing the old horses of the Premier League. Then that is Heung-min Son. मतलब I am not saying he's old in his age, but an experienced player of the Premier League under Antonio Conte. Trust me, he will flourish like nothing. भाई मतलब वो प्लेयर जो कुछ भी कर सकता है. He has everything in his locker, and he needs a manager who can unlock his abilities. But trust me, that will be Heung-min Son. This might come to a surprise कि why not Harry Kane? He is the prime striker. But for me, Harry Kane will play the supportive role to Heung-min Son, and he will actually help Heung-min Son to go for that golden boot. Obviously, we have Salah who could be sharing the golden boot, but for me, I'm just going for one name, and that is going to be Heung-min Son for me. Coming on to the playmaker award, as I said, कि मतलब प्रीमियर लीग में अर्लिंग हालैंड आ गया है, अल्वारेज आ गया है, एंड यू नो हाउ ग्रेट दिस सिटी टीम ऑलरेडी वाज. इस सिटी टीम को मतलब चांसेस क्रिएशन मेरे हिसाब से मैक्सिमम करते हैं. दे स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स, एंड व्हेन यू हैव एडेड टू अनदर लीथल फिनिशर्स ऑफ द बॉल, भाई लेजेंड फिनिशर्स ऑफ द बॉल. ठीक है भाई, अर्लिंग हालैंड ये मिस साइड रख दूं, बट यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट अर्लिंग हालैंड, और वो बंदा भी हमने स्क्वाड में ऐड कर दिया है. सो नाउ आई फील KDB को रोकना is just impossible. It will be Kevin De Bruyne who will be bagging the most assists this season. I think this is the season where he might break his own records. पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा for most assists in a season, and this might be the season for Kevin De Bruyne to actually unleash and see कि उसके जो वो क्वालिटी है बॉल पे, वो एक्चुअली कम क्वालिटी फिनिश से भी खत्म हो सकती है एट द अदर साइड ऑफ द गोल. मतलब गोल मारेंगे लोग उसके क्रॉसेस से. Now moving on to the third point, and this is a bit difficult one, I'll say. Last time जब मैंने prediction करी थी, I was somewhat ready to, मतलब मैं बहुत अच्छे से इसमें successfully I actually made that call underachievers वाली. I thought कि अब underachievers मैंने बिल्कुल सही guess कर लिए थे पिछली बार, and this season as well I think so I might be correct, and I am going with Leicester City. I don't know how are you guys rating Leicester City, how is every individual rating Leicester City, but most of the prediction जो मैंने अभी तक देखी है, many people are saying कि वो अब Leicester City को अपने top 10 में रखेंगे. ठीक है, and Leicester City might finish in top 10 या top 8 वाली positions, but for me this season will be an underwhelming season for Leicester City. आपने इस प्रीमियर लीग विंडो ट्रांसफर विंडो में कोई अभी तक साइनिंग्स नहीं करी है. Many of your players are being linked to move out. Kasper Schmeichel has already moved out. You need to get in a keeper. You might lose on Fofana, you might lose on Madison, but you need to make investments क्योंकि प्रीमियर लीग का लेवल इस सीजन बहुत अच्छे से बढ़ा है. न्यू साइड लाइक नॉटिंघम आके भी 11 साइनिंग्स एक सीजन में कर रही है. दैट इज द लेवल जो प्रीमियर लीग में कॉम्पीट करने के लिए चाहिए आपको. आई वोंट से तुम 11 साइनिंग्स करो, बट 2 or 3 क्वालिटी साइनिंग्स दैट एक्चुअली बूस्ट्स योर स्क्वाड. अब वाडी इज आल्सो गेटिंग एन एज, एक ईयर ओल्डर हो जाएगा वाडी भी, एंड यू रियली डोंट नो कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा. सो फॉर मी लेस्टर सिटी विल बी द अंडर अचीवर्स दिस सीजन. दे वोंट परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेशन जो सबकी प्रिडिक्शंस में है.
I'll say कि predictions में mostly we are going with the status को दिमाग में रख के हम जा रहे हैं Leicester City के over the past few years, but we are not looking at the current squad that they have. So Leicester City are my underachievers. Moving on to the overachievers of this season, I'll say for me the overachievers of this season will be Aston Villa. Guys, I know एस्टन विला को ओवर अचीव बोलना थोड़ा सा एक सेफ गेम है, थोड़ा सेफ बेट है, बट जैसे बाकी सब टीम्स की विंडो जा रही है ना, वी आर ओवरलुकिंग व्हाट एस्टन विला इज बिल्डिंग, व्हाट स्टीवन जेरार्ड इज एक्चुअली बिल्डिंग. वो कुछ क्वालिटी साइनिंग्स लेके आ चुका ही, मतलब उनके लिए विंडो बहुत जल्दी स्टार्ट कर ली थी उन्होंने, एंड दे मेड द साइनिंग्स वेरी क्विकली. वो अपनी स्क्वाड को बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था. दे हैव स्टार्टेड टू फॉर्म अ ग्रुप. वो एक टीम बनाने लग गए थे. इंडिविजुअल प्लेयर्स आप कितने भी ले आओ, बट यू नीड टू मेक अ टीम टू प्ले इन द प्रीमियर लीग, एंड वो एस्टन विला बहुत अच्छे से कर रही है. लास्ट सीजन एज वेल वी सॉ जेरार्ड के आते ही दिस टीम वाज टेकिंग सम डिफरेंट लेवल्स. बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, एंड दिस माइट बी द सीजन वेयर एस्टन विला might be actually pushing for the European spot yet again. मतलब the glory days of Aston Villa might come back, and I predict Aston Villa will definitely be overachievers this season and will finish at a European spot, maybe not at a European spot, but at least will be prime contenders for a European spot. Now, moving on to the surprise of the season. देखो, surprise of the season can be any player, can be any team, can be any moment जो मैं predict कर सकता हूँ. But for me, this time I'm going with a team that I associate myself with, a team that I live for, my favorite team, Chelsea. And why am I saying this? यार Chelsea को ना this season everybody has ruled out massively. Like every other journalist, every other football fan, every other watcher, or every other player, I'll say, सब overlook कर रहे हैं Chelsea को. Last season, this team was being was being the closest competition to Man City and Liverpool. इनको इन कंटेंडर्स बोल रहे थे कि उनको चैलेंज करेंगे. डेफिनेटली चेल्सी ने उनको चैलेंज नहीं करा, बट दे वर द थर्ड बेस्ट टीम इन इंग्लैंड. ऑब्वियसली एक बहुत मेजर आउटफ्लो हुआ है प्लेयर्स का, मेजर साइनिंग्स गई हैं टीम से, बट मेजर साइनिंग्स आ भी रही. For me, Koulibaly, Sterling, Chukwuemeka, and any other player that is joining Chelsea right now will be a great boost for Chelsea, because ये players थॉमस टूकल के players हैं. ये players वो हैं जो थॉमस टूकल को चाहिए. Trust me, surprise of the season for me this season will be Chelsea. मतलब सरप्राइज तो तुम कह सकते हो, दोनों एंड से हो सकती है. We might outperform our expectations, we might underperform our expectations. I am not seeing Chelsea as lingering for fourth, fifth spot. Either it will be below fifth spot, either it will be above fourth spot. मतलब बहुत अजीब सी बात कह रहा हूँ मैं, दो पोजीशन के अलावा कहीं पे भी चेल्सी आ सकती है, बट फॉर मी चेल्सी विल बी अ सीरियस टीम. ठीक है, मैं नेगेटिव साइड को नहीं ले रहा कि वी विल अंडर परफॉर्म. आई विल से चेल्सी विल ओवर परफॉर्म दिस सीजन. दे विल बी सीरियस, दे विल बी अ सीरियस टीम टू बीट, दे विल बी अ टीम टू बीट दिस सीजन. एंड अभी साइनिंग्स आनी बाकी है. यू नेवर नो व्हाट दे एक्चुअली माइट ब्रिंग इन. आई एम प्रेडिक्टिंग दिस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन, वेयर अभी तक कुकुरेया भी कंफर्म नहीं हुआ है. आई एम डूइंग दिस बिफोर दैट. सो for me, surprise of the season will be Chelsea. And also, साथ ही साथ I will also predict a player who I'll say will be the surprise this season, and that is Bukayo Saka. Like, Saka is a player who has established himself as one of the best players in London right now. Arsenal के लिए he is one of the most crucial players, but this might be the season when he'll show the world कि what Bukayo Saka is. बुकायो साका का इतना नाम क्यों है? Why we always said him कि उसके पास पोटेंशियल है. वो पोटेंशियल को इस सीजन लिव करेगा. He will be scoring for fun, या फिर he will be assisting for fun. He will have a very good season, I predict, and he will also replicate a season. Arsenal का सीजन कैसे जाता है, it will very much depend on how Saka will be playing. So for me, this is the surprise team, it's a surprise player. And now moving on to the most difficult part, the most fun part also, where जिसके लिए आप लोग मोस्ट प्रोबेबली आए होंगे वीडियो को सुनने, एंड दैट इज द टॉप 6. सो विदाउट एनी मतलब डिस्क्लेमर और विदाउट एनी हाइप अप एनीथिंग, मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ. मैं टॉप 6 ट्रेडिशनल 6 के साथ जा रहा हूँ. आई एम नॉट प्रेडिक्टिंग वेस्ट हैम या लेस्टर, वुल्व्स, कोई और, न्यूकासल इनफैक्ट, कि ये टीमें टॉप 6 में एंटर कर रही है दिस सीजन. आई एम गोइंग विद द टॉप 6. जो ट्रेडिशनल बिग 6 हम मानते हैं वही टॉप 6 में फिनिश करेंगी. दिस विल बी द सीजन जो हमें पता चलेगा बिग 6 को हम बिग 6 क्यों बोलते हैं. Competition will be very tight. Trust me, no team is running away with the title very easily.
या फिर नो टीम इज विल डिमार्केट टॉप 4 की लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला दिस सीजन। स्टार्टिंग विद द नंबर 6 स्पॉट, आई हेट टू से दैट बट आर्सेनल, मतलब तुम हंस रहे हो गए प्रेडिक्शन सुन के, एंड आफ्टर दिस कमिंग फ्रॉम चेल्सी फैन जिसको आर्सेनल ने बहुत गंदा पेला है अभी प्री सीजन में। बट ट्रस्ट मी, आर्सेनल के पास अभी एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, एंड दिस सीजन एज आई सेड कि मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ एक बहुत टफ बैटल, एक बहुत नेक टू नेक बैटल विद द वर्ल्ड कप ऑल्सो इन माई माइंड, कि वर्ल्ड कप भी आएगा बीच में सीजन के, प्लेयर फिटिंग को भी मैनेज करना होगा। आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी एंड एक्सपीरियंस मेंटालिटी, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा, एंड उस कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस आर्सेनल लैक कर रही है। So I predict Arsenal might do very well in cup competitions. They might even go to win the Europa League, but they are not going to do well in the league. The top six is a very good position to be in, but they won't be able to finish in the Champions League spot. And this is what I predict. Number five, I am going with Manchester United. Eric Ten Hag is here. He is looking very promising, but can he change the fate of the team within one season? I don't think so. Right now what I believe is कि United is building up for future. They are slowly and steadily they will climb up. They will build a good base, and this will be the season where they will be focusing on building up base. But I predict कि वो Arsenal से better कर जाएंगे because they have that mentality in their squad. They have players like Varane, they have players like Ronaldo, they have got Lisandro Martinez, they have other players as well who will be actually performing very well for them. एक मिडफील्डर की कमी है, आई डोंट नो फ्रेंकी डियोंग आएगा नहीं आएगा, रोनाल्डो स्टे करेगा नहीं करेगा, बट आई बिलीव यूनाइटेड विल have some good end to the transfer window and a good end to the season and will finish fifth in the league. Coming on to the top four, मतलब this might be the most controversial part of my video, but I predict either of Man City or Liverpool, ठीक है, मतलब मैन सिटी और लिवरपूल में से कोई एक टाइटल जीत रहा है। ऑब्वियसली मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से इन दोनों टीमों में से कोई एक टाइटल जीतेगा, बट यार आई फील सो कि एक टीम ना फॉल ऑफ करेगी, एक टीम मतलब सेकंड टीम विल नॉट बी कंटेस्टिंग फॉर द प्रीमियर लीग टाइटल, दैट इज व्हाट आई बिलीव। मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट दैट इनटू फ्रेज, बट आई थिंक दिस ईयर्स टाइटल रेस विल नॉट बी मैन सिटी एंड लिवरपूल, या दैट इज मी सेइंग दैट। एंड द टीम आई फील जो टॉप फोर जो टाइटल रेस में नहीं होगी एंड विल फिनिश फोर्थ, नॉट इवन थर्ड, द टीम दैट विल फिनिश फोर्थ दिस सीजन विल बी मैनचेस्टर सिटी। ठीक है भाई, मैंने केडीबी को प्ले मेकर बना दिया था, आई एम प्रेजिंग हालैंड, आई एम प्रेजिंग जूलियन अल्वारेज, बर्नार्डो सिल्वा अभी भी है, एडरसन कंसेलो एंड व्हाट नॉट, मतलब इस टीम के पास सब कुछ है। But I feel so this team will be focusing on the Champions League. This team will be preparing themselves for a bigger stage this time. And I think so, मतलब कहीं ना कहीं एक स्क्वाड डेप्थ की कमी कह लो या कुछ भी, मुझे इस टीम में लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे होंगी, एंड दे माइट नॉट फिनिश as high as they might expect to finish. मतलब मैं भी हर हफ्ते अपनी प्रोडिक्शन चेंज कर देता हूँ। लास्ट वीक आई वाज सेइंग कि मैन सिटी विल विन द टाइटल, बट फॉर मी मैन सिटी विल फिनिश फोर्थ दिस सीजन। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड, आई एम कमिंग टू चेल्सी, मतलब ठीक है मैं ग्राउंडेड रहूंगा, आई वोंट से चेल्सी विल विन द प्रीमियर लीग, आई थिंक चेल्सी विल बी थर्ड, एंड दैट विल बी एन ओवर अचीवमेंट एज मैंने तुम्हें पहले बोला वीडियो में, एंड दैट इज व्हाट आई फील कि चेल्सी विल फिनिश थर्ड सीजन में, उसमें सब डिस्कस कर चुका हूँ, नॉट गेटिंग इनटू चेल्सी एनीमोर। Moving on to the second and the first place, so I'll just say the champions. मतलब I think so तुमने guess कर लिया होगा। I feel Liverpool will win the league this season. It will be Klopp lifting a Premier League trophy. भाई जो उनका squad depth है ना, that is what scares me. भाई लास्ट सीजन तक ये टीम कम्पीट कर रही थी सिटी को, लास्ट 3 सीजन से, मतलब सिटी एंड लिवरपूल हैव अ नेक टू नेक फाइट एवरी ईयर, डिस्पाइट लिवरपूल नॉट बीइंग दैट स्ट्रांग। हम लिवरपूल की बेंच को क्रिटिसाइज करते थे, एंड दिस सीजन दे हैव एवरीथिंग भाई। उनकी बेंच देखो, उनके अटैक में दे हैव ऑप्शंस लाइक नूनेज, फर्मिनियो at the striking position, Carvalho on the wing, Luis Diaz, Salah, and मतलब क्या क्या प्लेयर्स नहीं है उनके पास, सब चीजें हैं भाई स्क्वाड डेप्थ के लिए, every fucking thing they have. माने नहीं है, that will be a big factor, but I think वो लुइस डियाज को पहले ही लाके उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है इस टीम में, एंड करवालियो आल्सो लुक्स प्रॉमिसिंग टू मी, आई एम अ फैन ऑफ दैट यंगस्टर, आई फील दिस टीम इज मेड डिफरेंट। इनकी बस मिडफील्ड और डिफेंस इनका साथ दे दे, आई होप कि ट्रेंट और वैन डाइक की पार्टनरशिप चल जाए,
they actually perform to the levels. And not just saying, I am predicting either Liverpool will finish first or fourth, and if they finish fourth, Man City will finish first. Like मुझे नहीं पता मैं क्या सेंस बन रही है मेरी बात की, but this is the thing. Tottenham will finish second. Antonio Conte का मैजिक चलेगा, but Tottenham being Tottenham कहीं ना कहीं बॉटल कर देगी, I feel so. And it is not on the banter side of the thing, but also on the squad that I feel. Tottenham को जो मैं squad देखता हूँ, I feel so कि not first, but हाँ सेकंड के लिए compete करने के लिए बिल्कुल रेडी है स्क्वाड. बट चेल्सी विल गिव देम टफ फाइट. यार उनके पास रिचार्लिसन आ गया है, एंड दे आर, मतलब एक मिडफील्ड में भी उन्होंने बहुत अच्छी डेप्थ क्रिएट कर ली है. बट कहीं ना कहीं अभी उनको डिफेंस पे काम करना है, एंड दे नीड टू वर्क ऑन सम सेंटर बैक्स एंड फुल बैक्स जो उनको चाहिए, जो कॉन्टे के सिस्टम को फिट करते हैं. एंड इफ दे गेट दैट, भाई वो प्रीमियर लीग भी जीत सकते हैं, यू नेवर नो. But this is my prediction. These are my predictions from the whole Premier League. I covered this in 6 points जो मैंने बता दिए. I don't think ये वीडियो ज़्यादा मैं extend करूँगा. But thank you so much for watching till here. And न्यू सीजन स्टार्ट हुआ है गाइस. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर. भाई कंटेंट आता रहेगा. न्यू सीजन स्टार्ट हो गया है. चेल्सी का कंटेंट हो, कुछ भी फुटबॉलिंग कंटेंट हो, ऑल ओवर यूरोप, एवरीथिंग विल बी हियर ऑन दिस चैनल. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग till here in the video if तुम सुन रहे हो तो. And see you guys in the next video. Thank you.